5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework, about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established.
missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C,
Support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I am happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. "1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs." Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha,
and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural
and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category.
enhanced scope for mandatory onboarding in trades. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the trades platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SITBI branches in MSME clusters. SITBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, petty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission.
We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments,
and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year, over the next 5 years, the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries.
A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavour to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance.
Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus
as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal
NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes.
I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap.
Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavour to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, TDS rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and TDS. Two tax exemption regimes. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate, and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize
the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively, with a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation. We will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies
operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals: to improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes, will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized.
Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वर्तमान समय टैक्स उपरे आसुछि आश्वस्ति आयकर दाता 3 रु 7 लाख टंका जाए आय उपरे 5% रही 7 रु 10 उपरे रही 10% एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन रे वर्तमान समय 50,000 रु 75,000 ताकू करा जाइछि रिहाती को एवं आमे टैक्स रो जेतबेले चित्र सामना को आडुछे 15 लाख उपरे 30% रही आयकर दाता आश्वस्तिर खबर सामना को आसुछि स्टैंडर्ड डिडक्शन रे वर्तमान समय 50 रु 75,000 को बढ़ा जाइछि 3 रु 7 लाख टंका जाए आय उपरे 5% टैक्स 7 रु 10 उपरे 10% टैक्स रही एथि सहित 10 रु 12 लाख जाए आय उपरे 15% टैक्स रही 15 लाख उपरे जो माने इनकम करुछंती तांको उपरे 30%
a number of sectors, right from agriculture, manufacturing to services who unlock the potential. It is focused on continued thrust on public capex, focused on very important areas like agriculture, MSME, skilling, employment. A lot of focus on this ease of doing business. किसी करिवे से सब प्रतिशत जहाँ आज देखा मिलला कि जो दुई राज्य बिहार एंड आंध्र प्रदेश को विशेष मान्यता मिलला आज पार्लियामेंट रे किंतु से हिसाब रे ओडिशा को विशेष किसी आम देखा पाइलु नहीं हुए तो रेलवे बजेट आसिले जना पड़ो कौन हो बजेट रे ओडिशा पे किसी स्पेशल प्रावधान नथिला केवल थिला आमर टूरिज्म सेक्टर पाई ओडिशा रो किसी एरिया को से माने आइडेंटिफाई करछन्ते कि एकटा गोटे वर्ल्ड क्लास क्लस्टर तैयारी हो पार नाउ आपनकर क्वेश्चन बजेट को आप केमती देखुछन जेमती कहली मु एवरेज देखुची आमर समस्त प्रतिक्रिया जहाँ है यही बजेट को समस्ते एवरेज भाविले आमे 1 to 10 स्कोर रे 6 नंबर आमे देवा को चाहूँ एटा जो प्रतिक्रिया आप इंडिविजुअली और समस्त को पचारि पारती सेमती अच्छी बट एवरेज जहाँ मुझ समस्त पाइली आमे या 1 to 10 रे 6 मार्क्स देवा नाउ ये जो मेजर जो इश्यू है जोटा आम आज देखिलु कि फिस्कल डेफिसिट को जोटा कि लास्ट टाइम 5.1% थिला ताकू 4.9% करिसंती एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप सरकार धीरे धीरे तार वित्तीय घाटा को कमेवा लगी और आशा भी कर स्टेटमेंट कौच प्रति वर्ष से कमे कमे चलिए दैट मीन्स खर्च उपर कंट्रोल करेंगे विशेष लोन नेबेनी बाहर आसबनी और ये घाटा जोटा चली कमेबे दिस इज अ वेरी गुड स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन तो एंड तापरे मु देखिली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स उपरे बड़ा गुरुत्व दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स तो दे ना किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे जो प्रावधान रखिंट मु भावुची जदि डिसेमिनेट करा जीवो स्टेट लेवल रे ओडिशा मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर रे किछिटा पाइबो स्पेसिफिकली कहि नांती किंतु मु भावुची आमे आमे सेथरे पाइबा किछि ना किछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे ऑफ कोर्स से माने किछि विशेष प्रावधान देइछंती इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी कमेवार करछन जेंति कि आमर शिल्प जेंति और कम्पिटिटिव हो पार तो गुड़ाए कस्टम्स ड्यूटी से माने ताकू ये करछंती माने बढ़ाई सो दैट वी विल बी मोर कम्पिटिटिव so this is a one good sign that Indian industry will become more competitive particularly in the metal sector जोटा कि and critical metal sector जोटी rare earth जोटी कि हुए तो ओडिशा भी किछिटा पाइबा जो तो आपने जानिछन गोपालपुर रेयर अर्थ आमर प्रचुर मात्रा रे पा जाए तो रेयर अर्थ निकेल कोबाल्ट क्रोमियम ये जो लिथियम ये जो रेयर मिनरल्स अच्छी जोटा कि फ्यूचर मिनरल्स जोटा कि कैपिटल मान क्लाइमेट चेंज पाई साहाय्य करिवो सोलर पैनल तैयारी करी पाई सोलर एनर्जी को बूस्ट करिया पाई ता उपरे बहुत गुरुत्व देइछंती क्लाइमेट चेंज उपरे भी सरकार रो गोटे ध्यान रही जोटा कि भारत वर्ष गोटे कमिटमेंट नेशनल लेवल रे स्टेट लेवल माने कंट्री को कमिट करी आस्ते भारत प्रधानमंत्री ग्लासगो रे और लास्ट टाइम दुबई रे मध्य कि आमे आमर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को 45% लेवल को नहीं आसबू बाय 2030 2005 लेवल रू सेटा को करिवा पई जहां मु देखुची क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन प्लान रे गुड़ाए प्रावधान रही बाकी आमर ट्राइबल अंचल करिसेंती ट्राइबल स्कीम गुड़ाए आगु को आसवा को जाउची जोटा कि से चुंबक रे ठेक रे जणैले एक्जेक्ट स्कीम पर जेतेबेले डिटेल्स आसीबो आमे जानि परिबा तो एटा आमु मोर बंधु संजीव को कहबी से या को रिएक्ट करिवे एमएसएमई एक्सपर्ट अछंती से नाही एनीवे आप कोन तो सेठी कोन तो आसीबो सुबिबो देखो तो एमएसएमई मु जने एमएसएमई मैन्युफैक्चरर किंतु एमएसएमई ऊपर जति कि हमर आशा थिला मु भाबुची हम शारदा सर जेमती कहले सेटा को हमें 5 रेटिंग दब एमएसएमई रे
आमर गोटे हूँ मुद्रा लोन बढ़ी आ गोटे से जो कोलेट्रल सिक्यूरीटी जोटा बढ़े जोटा 100 कोटी जो टर्म लोन रे सेतिकी मिली बट कौन सी गोटे रोड मैप क्लीयर रोड मैप ना एमएसएमई जोटा कि आम एक्सपेक्ट करूँ बहुत किसी अच्छी एमएसएमई मार्केट लिंकेजेस अच्छी एक्सपोर्ट अच्छी जो थे क्लीयर गोटे रोड मैप ना आम एक्सपेक्ट करूँ एमएसएमई गोटे स्पेशल एम्फासाइज देकरी गोटे स्पेशल बजेट एलोकेट हम ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जोटा कि क्वाइट क्लीयर ना एवं सबुठु निराशजनक हूँ आम एक्सपेक्ट करूँ कहीं आम एथर 20टा एमपी देलु ओडिशा 20 जन माने 21टार 20टा एमपी आम जाइलु तेणु आमर टिके निराश लगुच कहीं पर्टिकुलरली आम एमएसएमई एंटरप्रेन्योर मान जे गोटे रोड मैप आमको दरकार क्लीयर रोड मैप जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट हुए तो रिफ्लेक्ट करेंगे बजेट रे जना पड़ो किंतु यही दुईटा छड़ा आउ क्लीयर कट कौन सेमती गाइडलाइन ना एपर्यंत मु भावुँ तेणु गोटे क्लीयर रोड मैप सरकार देला परे जना पड़ो जे एमएसएमई रे कौन बेनिफिट आम फर्दर बेनिफिट पाइबू अपार्ट फ्रॉम दिस टू मुद्रा लोन बढ़ी 20 लाख 10 लाख रु हाँ एग्जैक्टली सेटा कंडीशन जोटा प्रथम क्लीयर करथिबो ताकू 20 लाख मिल तेणु सेमती नहीं कि हाँ जदि किसी प्रॉब्लम है कौन है से तो हेल्प करवा ये करवा सेमती किसी ना क्लीयर कट गाइडलाइन आउ सेकेंड हूँ जो टर्म लोनटा ठीक अच्छे से गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जोटा कि से बिना कोरेलेटेड रे दौरान 100 कोटी जाए सेटा भी गोटे स्वागत योग्य हाँ किंतु आमको एम्फासाइज करियो खबो जे बैंक सेटा को इम्प्लीमेंट करियो सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एंश्योर हाँ कौन कहल हाँ से हाँ सेटा हाँ सेटा गोटे स्वागत योग्य जिनस किंतु सेटा को इम्प्लीमेंट हवा दरकार लोन कले गवर्नमेंट गाइडलाइन दे देले किंतु सेटा को इम्प्लीमेंट जल्दी करिकरी एमएसएमई मान को सपोर्ट देवा दरकार कहना बहुत स्टार्टअप आसुची किंतु चालुनी फ्लॉप हो जाउची कमर्शियल बैंक भी दउना ना तेणु यही सब एटा जदी करिसंती दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड लेवल विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ आपन किसी कहबा कि बजेट में क्रेडिट गारंटी स्कीम रे आपन गोटे चाहुतले गोटे नुवा किसी गोटे स्टैंडर्ड गोटे फिक्स करिके सेते किसी परिवर्तन होला बडा लागुची परिवर्तन हाँ हेची कहना से माने गोटे गोटे दउचंती क्रेडिट रिस्क 5 crores of collateral हाँ कोलेटरल फ्री but these are conditional last time 2 crore thila 2 crore हेलानी किछि हेलानी That depends upon the bank. Again, the bank will take the call. It is a bank committee to take it. देखिए सिक्किम उत्तराखंड वाला स्टेट जो माने नेचुरल कैलामिटी को प्रॉब्लम फेस करूजंती सेମାନଙ୍କ ପାଇଁ स्पेशल असिस्टेंस पता करिन ओडिसा रो मध्ये प्रति वर्ष साथे दुर्विभाग आସୁଛି ताकू देखिले से बोले कि ओडिसा में स्पेसिफिक सेमती किछि नाही ताको आपण केबे देउछन नहीं शायद मु प्रारंभिक सूचना देली कि आम पाई सेमती कि नहीं आमर तो साइक्लोन को पूरा प्रत्याख्यान कर देले जेमती लागुची कि जो प्रति 2 वर्ष रे थरे आमे ए दुर्विपाक को देखुछु सामना करू सेटा कि नहीं किंतु एनीवे आज आमे बजेट ऊपर जेतो चिंता करू तो हम अन्य सब्जेक्ट भी अच्छे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आमर एक्सपर्ट अछंती मिस्टर जेके साउ चार्टर्ड अकाउंटेंट अछंती यारे दुई बंधु चार्टर्ड अकाउंटेंट बसछंती further income tax will let us discuss on other issues disaster मैंने हाँ हाँ एटा सर्टिफिकेट टूरिज्म के लिए बोलिए जेके साहब सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेल्फ इंट्रोडक्शन या मो ना जयंत कुमार साहब चार्टर अकाउंटेंट मु प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 77 करूची सर आज जो केंद्र अर्थमंत्री जो बजेट रे जो गोटे आशा थिला निर्वाचन करे जोटा न्यू टैक्स रेजिम रे जो एक्सेप्शन लिमिट पर्सनल इनकम टैक्स रे 3 लाख थिला सेटा को गोटे चर्चा होतला 5 लाख करिवे नॉट एटलीस्ट 50,000 टावर बढ़ेबे 3.5 लाख करिवे ये तो किछ देखिबा को मिलला नहीं
जो टैक्स रेजिम जहाँ थिला गत वर्ष जहाँ देइथिले सेइथरे सेम टी छाडले अर्थात जदि आमे कहबा एक्सेम्पशन लिमिट को लास्ट 3 to 4 इयर्स पर्यंत अनचेंज रहिला देखो ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब दुटा रेजिम अच्छे ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम किसी करनी जहाँ से रही न्यू रेजिम अल्प चेंज कर टोटाल 17,500 रिबेट पाचे जहाँ थी देखूँ अप टू 3 लाख नील बर्तमान से रखी एवं 3 to 6 लाख थी 5% तो 3 to 7 करदेला देन 6 लाख 9 लाख थी 10% बर्तमान कला 7-9 लाख 10 लाख करदेला सिमिलरली कला 9 to 12 थी 15% बर्तमान 10 to 12 15 करदेला 12 to 15 थी 20% और से चलला कंटिन्यू सेम रही तो अल्टीमेटली 17,500 रिबेट पाऊँ ये गोटे सेकेंड जो था स्टांड डिडक्शन फ्रॉम पेंशन होल्डर एंड सैलरी होल्डर मानक से 57% थिला ताको 75% कर दिया गला लेकिन फैमिली पेंशन ता माने हस्बैंड हस्बैंड डेथ हो जाइए वाइफ फैमिली पेंशन पाऊँ से थिला हमर थिला अप टू 15 थिला और 1/3 व्हिच इज लोअर बट 20% करदेला एति आउ किसी एमती किसी माने आखिर से किसी करना टोटल 37,000 crores देले किंतु अन्य हाथ 30,000 crore बाहर कर नहीं गले कि इफेक्टिवली मात्र 7,000 crore रो इंपैक्ट सरकार ऊपर पड़ुची किसी विशेष नहीं विशेष किसी सुविधा मिले नहीं 17,500 गोटे लोक गोटे इनकम टैक्स दउची ताकू जदी न्यू रेजिम रे जाए मैक्सिमम बेनिफिट से 17,500 टका दिस इज व्हाट ताकू फर्दर ब्रेकअप करा जिवो देखिया कोन स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी 50,000 से 75,000 हां 25,000 अदर बेनिफिट not for only for salary person not for everybody but salary for everybody त्रिपाठी बाबू और किसी कहू ना और कौन टिके गोटे जनरल हो जाऊ तापर गोटे तापर कहिबे नहीं सरकार विजन कौन से प्लान करने नेक्स्ट 5 वर्ष से आउटलाइन कराई आम अभी ये बजेट को ता संगे मैच करवा कथा जे बजेट रे कौन से व्यवस्था कले कि ना तेणु मुझे देखुची बहुत गैप रही है बहुत गुड़ा कथा कही जोटा कि एड्रेस करना जो बजेट आज जो फॉर एग्जांपल देखो गोटे जिनस से कहते 6 pronged स्ट्रेटेजी कहते गोटे है फास्ट हो कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइवेट सेक्टर ग्रोज ऑर्गेनिकली एंड स्टडीली ता विषय स्पेशल किसी तो ना कैपिटल कैन फॉर्म हो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्म हम जब इनकम टैक्स रेट कमेबे लोक हाथ रहे पैसा इन्वेस्टमेंट हम से हमारे कौन स्टेप्स देखा जाऊनी तापर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स विल एमर्ज एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन जो क्लाइमेट चेंज रो जो आमर जो समाधान पे जो जो कह जाए ग्रीन ट्रांजिशन माने जो पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी एवं एमिशन आम ओहरी रिन्यूएबल एनर्जी को जो एमिशन कम हम और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करा से विषय में आप देखिए जब बजेट से खास किसी स्पेशल स्टेप्स मुझे देखा पाइलिनी खाली सोलार एनर्जी पछे किसी स्टेप्स देते कैपिटल इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट इंपोर्ट हम सोलार एनर्जी प्लांट जो मैंने बसौं मैन्युफैक्चर कर सोलार सिस्टम जो गुड़ाक ताप किसी बेनिफिट देते कि विशेष किसी फंड कि गोटे कौन सेमती किसी जदिव कहते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है MSMEs भी कहते गवर्नमेंट हैज टू फाइंड अ वे टू ब्रिज द क्रेडिट गैप जो क्रेडिट गैप गोटे बेनिफिट खाली देते जो 500 crores अधिका टर्नओवर जो कंपनी को जो बिकुवा एमएससी जे बिकुवा जो फाइनेंसिंग तार होचे ट्रेड रिसीवेबल ताकू से लिमिट कमे 250 crores को से गोटे बेनिफिट आसी तार एक्चुअल इफेक्ट तो देखा पड़ो तापर एग्रीकल्चर सेक्टर उपर भी बहुत प्राधान्य दिया जाए कहुई एबे जो बजेट देखिले आप एग्रीकल्चर सेक्टर विषय में तो जापानी कौन प्लान कले कारण समस्त सबू प्रायतः देखिए नंबर्स कौट किसी कहना खाली फाइनेंस मिनिस्टर कहले आम एग्रीकल्चर सेक्टर प्राधान्य देवु टेक्नोलोजी आणबू कि कौन एक्जाक्टली करेंगे केते टका सैंक्शन से विषय किसी कहले आउ गोटे कथा हूँ स्किलिंग जो कहुई गोटे मुझे स्वागत योग्य पदक्षेप से स्किलिंग भी गोटे फोकस एरिया रहा कथा जो कहते आम जो 1 crore इंटर्नशिप दबू विभिन्न कंपनी को 5,000 टका से पाइबे पर मंथ सैलरी
भावी सहीटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप होती एड्रेस करा जो स्किलिंग खाली करदे हेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रे एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टा दि जाऊ सेटा मोर इंपोर्टेंट कारण एमाने जदि कंपनी काम करेंगे से शिखि पारे और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो माने से चाकरी एक्चुअली पाई पारे फ्यूचर कंपनी आउ गोटे हूँ इंडिया मस्ट अचीव मस्ट एनहांस स्टेट्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी स्टेट मेसिनरी रे बहुत रोल अच्छी आमर जहाँ प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जो कहले ताको अचीव करने कि हाथ को आने राज्य सरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण रोल इनफैक्ट 80% रोल होगी राज्य सरकार स्कीम तो बढ़िया बढ़िया स्कीम अनाउंस कर केंद्र सरकार राज्य सरकार केते दूर कार्य कर स्टेट जो मेसिनरी अच्छी जो ब्यूरोक्रेसी केते प्रॉम्प्टली डिलीवरी दे पार्छ अकाउंटेबिलिटी अच्छी कि नहीं टाइम हो टाइमली कर साहय कर लोक तेणु यही सब जिन विषय कौन विशेष पदक्षेप से कहना वर्तमान बड़ सूचना बजेट उपस्थापन पर सेंसेक्स डाउन पाखापाखि 1000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन होइछि एवं एबे 546 पॉइंट रे सामान्य रिकवरी करिछि किंतु तथापि भी नेगेटिव अछि मार्केट आपन जो देखिबे सेंसेक्स पर बैंक निफ्टी मिड कैप ये सबू वर्तमान डाउन अछि निफ्टी पाखापाखि 350 पॉइंट डाउन थिला एबे सामान्य रिकवरी अछि तथापि 200 पॉइंट डाउन वर्तमान निफ्टी अछि निफ्टी बैंक भी पाखापाखि 500 पॉइंट डाउन 51,770 रे चलछि एवं निफ्टी आपन जो देखिबे 24,300 रे चलछि ये आहुरी डाउन हबो जहां आशा करा जाउछि कारण मार्केट जो न्यू टैक्स स्लैब्स अनाउंस इन यूनियन बजेट जो नुआ टैक्स स्लैब आसिला ता सहित अनेक गुड़िए योजना जहां आज राज्य केंद्र सरकार घोषणा करछन्ती बजेट रे taxpayers earning up to 3 lakh year won't have to pay tax in the new regime. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced while presenting the union budget. Meanwhile, 5% income tax will be levied on 3 to 7 lakh income, 10% on 7 to 10 lakh, 15% on 10 to 12 lakh, 20% on 12 to 15 lakh, and 30% will be levied on income above 15 lakh. अर्थात 15% above यदि आप देखिए 15 लाख ता जहाँ थिला ता वर्तमान समय स्थिर रही से किसी परिवर्तन नहीं किंतु सामान्य जो माने स्टैंडर्ड डिडक्शन थिला 50,000 टंकार ताकू आउ 25,000 टंका बढ़ा जाइछि ताकू 75,000 कराइछि तेणु एभली स्थिति रे मार्केट खूब नेगेटिवली बिहेवियर देखैछि आपण मु जदि स्टॉक स्पेसिफिक किछि स्टॉक मध्ये कहबा अविनाश टिके मु स्टॉक कहि दोछि काइना अति गुरुत्वपूर्ण इरिडा 263 2.2% डाउन आरएफसी गोटे बड़ स्टॉक आरएफसी आपणकर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6% 7% डाउन आपणकर एमआरपीएल 4% डाउन ता सहित आपण मु कहि दउची बीएल बेल एलआईसी आपण अरुण बुझी पारथबे निश्चित भाव रे एलआईसी 1091 टंका स्टॉक हेची 30 टंका डाउन पाखापाखि 2.77% हुडको जे फाइनेंसिंग रे हुडको रो सहायता रही 6% डाउन हुडको एवं हुडको 302 टंका हेची गेल कोंतु लुपिन कोंतु पॉलिसी बाजार आपणकर सबु सेक्टर इरकॉन रेलटेल आईआरसीटीसी सेल इरिडा पेटीएम ता सहित आपणकर केईसी इज माई ट्रिप आपण को आसुची बैंकिंग सेक्टर को इंडसइंड बैंक आज इवेंट आपणकर एक्सिस कोंतु एसबीआई वर्तमान 1.20% डाउन एचडीएफसी 1.19% डाउन आईसीआईसीआई बैंक पाखापाखि 13 टंका डाउन चलची कोटाक सेमती डाउन रही नेगेटिव अच्छी एनबीसीसी आपणकर 5% डाउन अच्छी तेणु स्वाभाविक भाव में ऑटो सेक्टर को आसुची टाटा मोटर्स 1.33% डाउन महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% डाउन अशोक लीलाइन 1.43% डाउन जेकेटा 2.44% डाउन मारुति 10 पॉइंट आमे आसुचे स्टैंडर्ड रिहाती 50 रु 75,000 को वृद्धि करा जायछि जेतबले बजेट रो टॉप 7 आमे देखौछे 3 लाख पर्यंत कौन से आयकर दबाकू पड़ो ना ए सूचना आम दर्शक बंधु को देदबा एथि सहित जदि पॉइंट 3 को आप देखिए 3 रु 7 लाख टंका जाए आय उपर 5% आपन को कर दबाकू पड़ो अनेपटे जब देखिए 7 रु 10 लाख टंका उपर 10% आपन को कर दबाकू पड़ुछि ता सहित जदि 10 रु आपण 15 लाख पर्यंत 12 लाख पर्यंत देखुचे सेठी 15% आपन को टिकस दवाई पड़ुछि बा कर दवाई पड़ुछि अनेपटे जब देखिए 12 रु 15 लाख जाए 20% टिकस कथा कहुच्छी पॉइंट 7 उपर जदि आप नजर पकेबे जहाँ चित्र रही 15 लाख और 15 लाख अधिक आय 30% कर
एक कथा को मध्य कहा जायछि। ये जेतबेले आमे स्टैंडर्ड डायरेक्शन रे जेतबेले परिवर्तन रहिला 50 रु 75 हजार को आसला ता परवर्ती समय कौन चित्र रहुछि ए ऊपर नजर रहितला। अविनाश जो देखिबे बजेट गोटे आपण मार्केट को नेकी जेतबेले कहउतले बजेट समान को एतिकी उत्साह देखा जायनी सेति पई बड़ बड़ शेयर रे ह्रास हेबा चित्र देखा जाउछि। ईसीसीआई मध्य प्रेस मीट करथला ताको एवरेज मार्क देछि। ओवरऑल बजेट को 6 मार्क रे से सीमित रखिछि। जदिओ फिस्कल डेफिसिट को कमेबा गोटे स्वागत योग्य कथा खर्च पर सरकार कंट्रोल करुछंती किंतु भिन्न भिन्न बाटरे सरकार बहुत अधिक उत्साह देखै पारि नाहंती एवं भिन्न भिन्न सेक्टर रे सरकार कोटना कोठी गोटे बड़ चित्र देखै पारनांती गोटे क्लियर विजन बा स्पष्ट चित्र देखै पारनांती। अविनाश एक कथा के यूसीसीआई कहउतला निश्चित भाव आपणकर एसटीसीजी को 20% मुझे बोली बजेट को स्वागत करुच्ची आटा गरीब लोकंर बजेट एटा गाँ लोकंर बजेट अच्छी महिला मान बजेट अच्छी आटा कृषक मान बजेट अच्छी ये बहुत ही बढ़िया ताको मु स्वागत करुच्ची। थैंक यू करुछंती केंद्र मंत्री बजेट को एक कथा को से कहउछंती केंद्र मंत्री स्वाभाविक अविनाश मु जो कथा उल्लेख करथुली our country there was no mention of Manrega. There was no mention or insufficient mention of any steps taken to improve the income of the ordinary person. We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally, it has happened. I'm glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise, I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. Sir, how do you see this budget? किया गया है उसमें बिहार को स्पेशल आर्थिक पैकेज दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बाहर है या फिर से एनडीए ही सरकार है और रहने वाली है और इसके लिए जो भारत सरकार ने जो दिल खोल करके बजट में जो बिहार के विकास के लिए किया है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से बिहार के एक सांसद होने के नाते मैं बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बिहार के विकास का जिन्होंने उसमें कहीं कोई कोताही करने का काम किया हो, चाहे वह पीएमजेएसवाई की रोड की बात हो, चाहे वह बोधगया की बात हो, चाहे नालंदा के टूरिज्म की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की बात हो, या सारे चीजों में जिस तरीका से बिहार के प्रति भारत सरकार ने जिस तरीका से दिल खोल करके बजट में व्यवस्था किया है, इसके लिए मैं बार बार बिहार वासियों की तरफ से, अपने क्षेत्र महाराजगंज की तरफ से, महाराजगंज वासियों की तरफ से मैं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से बधाई करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। शुणुले बिहार को लेकिन किभली भाव में खुशी अच्छा अविनाश, बिहार और आंध्र को बोनाजा देते अंपटे आसाम जो फ्लड मैनेजमेंट पाई, सिक्किम पाई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशार टूरिज्म पाई किछि साहाय्य सहायता आसी, किंतु बिहार आंध्र को जो भाव में सहायता दि जाउछि ताको आपण केम देखंती? मु से प्रसंग प्रतिक्रिया future there will be many projects will come to the Andhra Pradesh. Now Andhra Pradesh we are very happy. ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ రోజు చూస్తున్న గత 10 బడ్జెట్ शुणुले ता पूर्व से जहाँ कहले जे आंध्र को 15,000 कोटी टंकार पैकेज, बिहार को मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट पर स्वतंत्र अनुदान। अविनाश जो कथा उल्लेख करते ओडिशा को टूरिज्म क्षेत्र में किसी बूस्टअप मिल किंतु स्पेसिफिक एलोकेशन संपर्क में किसी सूचना नहीं। पोलाभरम प्रकल्प को त्वरान्वित कर कथा भी कहुई। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आईन अनुसार अधिक सहायता मिल कारण आंध्र प्रदेश प्रमुख सहयोगी टीडीपी वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट एक प्रमुख सहयोगी एवं 2.66 लाख कोटी टंकार जो आपंकर रूराल डेवलपमेंट फंड आलोकेशन होती प्रमुख भाव में से सब स्टेट गुड़ी को अधिक आलोकेशन हम ए सन्देह ना। मो एक मेजर इश्यू को आपंकर एसटीसीजी सर्ट टर्म कैपिटल गेन मार्केट कहीं खसला
ना आपणकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गोटे प्रॉपर्टी जदि आप सेल कर 36 मंथ्स भितर ताकू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह जाए। आपन किसी हाउस सेल कर लैंड सेल कर गोल्ड सेल कर इक्विटी सेल कर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच यू आर होल्डिंग आप जहाँ रखिंट 36 मास भितर जदि आप सेल कर आपन को 15% टैक्स गवर्नमेंट को दबाक पड़ूला। वर्तमान से टैक्स 20% है आपन को 20% टैक्स इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आम जहाँ कहतु जे आपणकर जदि गोटे घर बिक्री है 36 मास तले कि 3 वर्ष में घर बिक्री कले 20% टैक्स आप बर्तमान देवे आगुरी जहाँ 15% था। आउ दीर्घ दिन गवर्नमेंट एक आशा रखुला शेयर मार्केट रे इक्विटी मार्केट कहतु बा कैपिटल मार्केट कथा कहतु जो मानकर आपण गोटे शेयर होल्डिंग कर 3 ईयर रे आपण ताकू सेल कले बिलो 36 मंथ्स ले आपन को 20% दबा को पड़िबो टैक्स। जहाँ वर्तमान समय जो माने निवेशक अच्छा मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने अच्छा आशा करा जाउ नथिला कारण गवर्नमेंट वर्तमान सबु क्षेत्र अर्थ बा फंड चाहूँगी जो 15 को 20% सेठी करागला। आपन को 25,000 रिबेट दियागला स्टैंडर्ड डिडक्शन रे किंतु आपनकर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उपरे पाखापाखी 5% एक्स्ट्रा नहीं तो हो सकता है बिहार और आंध्र के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि इस बजट से समाजवादी खुश है? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको लगता है कि ये पूरा मॉडल अयोध्या जैसा कर रही है ये सरकार? यादवकर रही जे किभली भाव में आंध्र आउ बिहार को से खोली देइछंती तांकर छत्र किंतु किसान बा कृषक युवक मान से कौन से बजेट रे नाही आगामी निर्वाचन या प्रभावित करिवो मध्य। सुनतु मोर फास्ट रिएक्शन बजेट उपरे होछि आपण माने देखंतु हमर रिसोर्सेस होछि लिमिटेड। हमर रिसोर्सेस लिमिटेड माने आम पाखे सरकार पाखे टंका आसूची कौठू आम जीएसटी रु किछि टंका पाउचे, डायरेक्ट टैक्स रु किछि पाउचे, कस्टम्स रु किछि पैसा पाउचे। आम टंका खर्च करुचे कौटी आम पाखे गोटे प्रायोरिटी जोन कहीं नहीं। आपन देखंतु आमे आमे सबुठु बेसी चिंता करुचे आमर अनएम्प्लॉयमेंट, आमे सबुठु बेसी चिंता करुचे आमर प्राइस राइज। एई दीटा जेते लोकों को बाधुची इनकम टैक्स रे 300 टंका आपण अधिका टैक्स देले आपण सेते बादिवनी। परिबा बैग नहीं कि जाउचंती 1000 टंका रे गोटे बैग रे परिबा आसुनी। सो दैट इज आवर मेन कंसर्न। तेणु मोर कहया कथा रिसोर्सेस को जिते प्लानिंग करा जाए आम अर्जेन्सी को देखा। बॉम्बे रु दिल्ली 8 वे नेशनल हाईवे अपेक्षा आमको दरकार प्रति जिले में गोटे हॉस्पिटल, आमको दरकार प्रति जिले में गोटे गोटे मेडिकल कॉलेज। आम रिसोर्सेस को कहीं प्लान करि पारुने, आम कहीं गोटे 365 दिनिया बजेट देखिक एत खुशी हो जाउछ। सो व्हाट वी रिक्वायर इज ए लॉन्ग टर्म विजन जोटा को आमको नीति आयोग पॉलिसी डिसीजन जो अच्छी विजन 2030 आमे दिन थिला जेतले हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी कहले आमे 15 गीगाबाइट रो पावर जनरेट करि परिबा आमे ने कर देले। वी हैव डन इट। हमर लीडर माने जहा कहउचंती कोन आमे ने न करि परछे। हमर ग्रीन एनर्जी ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहले आमे ग्रीन एनर्जी के फोकस देकरी करबा आमे ने करि थोइ देले पृथ्वी रो नंबर 1। तेणु आमे हमको सही भलिया डायरेक्शन दरकार। बड़ खबर ओडिशा को अवहेला आंध्र एवं बिहार को अन्न छत्र खोली देइछंती केंद्र बजेट रे ओडिशा को अवहेलार कथा सामना को आसुची। ओडिशा पई घोषणा हलानी स्वतंत्र अनुदान। ओडिशा आशा करुथला भिन्न भिन्न सेक्टर रे अनुदान र कथा। पर्यटन विकास नारे लॉलीपॉप धरैछि केंद्र जहां गुरुत्वपूर्ण सूचना आसुची बजेट रु आंध्र बिहार को सहायता ओडिशा को अणदेखा। ओडिशा मध्य पूर्व फोकस स्टेट रो मान्यता दाबी करुथला, स्वतंत्र सहायतार दाबी करुथला, नेचुरल कैलामिटी पई डिजास्टर रेजिलियंस भित्तिभूमि मध्य दाबी करुथला। केवल मंदिर एवं अन्य पर्यटन स्थली पई किछि घोषणा करिदेले किंतु निर्दिष्ट भाव में कोनोसी फंड रो कथा नाही। ता भितरे मु आपनक पाकु आछि जेतेबेले आसाम रो बन्या पई स्वतंत्र पैकेज घोषणा करा जाउछि जोंठी ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्यय संपन्न राज्य। आपण एटी कोस्टल कॉरिडोर कथा कहितले, आपण एटी कोस्टल हाईवे कथा कहितले, आपण एटी कहितले जे आमे परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करिवु जेमती आपनकर बात्या को सही पारिबे बा आपण अनुकूल किछि आपण इलेक्ट्रिक कथा कहंतु किबा कोस्टल कॉरिडोर रे आउरी अनेक गुडी कथा आपण कहितले किंतु किछि भी हला नाही। बरं आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम भली जोटी
राज्य बीजेपी शासित राज्य सेठी को आपनकर फंड गला किंतु ओडिशा रे प्रथम करी सरकार को आसीबा परे भी कोनोसी प्रकार रो ओडिशा को स्पेशल ना आलोचना हैला। अजय दास हमसे अछंती मोर वरिष्ठ सहयोगी कटकरू। अजय को गुरुत्वपूर्ण विषय हैला ओडिशा को अवहेला। सीआईआई चेयरमैन करो प्रेस मीट आछी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सर यूनियन बजेट आपण एनालिसिस करथले सीआईआई तरफ को दिगो को केमती देखुचंती कोन गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रहिছে थर बजेट रे। नमस्कार। आज जो बजेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट कले सेटा गोटे मु कहबी ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट। ए बजेट रे आम जो 9टी प्रायोरिटीज सेट करिसंती सेटा आम विकसित भारत पाई बहुत गोटे प्रयोज्य हेबो। ए बजेट टी रे मु 3-4टी दिग को कहबी। प्रथमत गोटे जोटा कि आमर बहुत रे एम्प्लॉयमेंट पाई से सेक्टर गुड़ी कहला जमती मैन्युफैक्चरिंग हो एग्रीकल्चर हो से प्राधान्यता दे जाइए। से आपण देखिए एग्रीकल्चर पाई से जो प्राधान्यता दे जाइए एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर पाई बजेट जो आलोकेशन होटा एवं विभिन्न भेराइटी रिसर्च हम एवं भेराइटी प्रोडक्शन हम सेटा आमर फार्मर इनकम पाई अभिवृद्धि रे साहाय्य होइबो। सेकेंड है जोठी आपणकर स्किलिंग हो एम्प्लॉयमेंट हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो से बहुत गुड़े सबू प्राधान्यता दि जाइए। से आलोकेशन दि जाइए 1.52 करोड़ फॉर MSME डेवलपमेंट पिला माने जमती ITI पाई इन प्लांट ट्रेनिंग पाई सेठी केते गुडिक प्रोविजन रही। 30 वुमेन डेवलपमेंट है वुमेन डेवलपमेंट रे मंद महिला माने केमती आगु बढ़िबे एवं एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र हो विभिन्न क्षेत्र रे सेमानकर सेल्फ डेवलपमेंट क्षेत्र एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र रे मध्य बहुत गुड़िया आलोकेशन रही। चतुर्थटी होची इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य बहुत गुड़िए आलोकेशन रही। तेणु आमको देखा गले ये जो 9 प्रायोरिटी दिया माने रही सबुड़िक बहुत इम्पोर्टेंट देशपाई देशर अभिवृद्धि पाई केते गुड़िक कस्टम ड्यूटी रियलाइजेशन राशनालाइजेशन केते गुड़िए इनकम टैक्स राशनालाइज करा से गुड़ा तो फाइन प्रिंट आसला पर जना पड़िबो किंतु जो अभिमुख्य रही सरकार देश को प्रगति भितर और स्पेसिफिकली जदि ओडिशा को आसे ताले आमर जो पूर्वोदय स्कीम रही स्पेशली मेंशन करा जायछि टूरिज्म एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पाई ओडिशा केमती डेवलपमेंट हो पारिबो विभिन्न क्षेत्र रे टूरिज्म क्षेत्र रे अन्य क्षेत्र रे सेति पाई मध्य आमर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन करछंती। तेणु मु तांको धन्यवाद देबी ओडिशा पाई से सुचिंतित रही। आमर सेकेंड सेक्टर जोटा इकोनॉमी ओडिशा पाई टूरिज्म से मध्य निश्चय आगु को अभिवृद्धि रहिबो। तेणु देखा गले ओवरऑल ये जो बजेट है आम देश पाई बहुत भल आग को जितेबले सब गुड़ाक रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन नब तार सुफल आमको निश्चय मिल। धन्यवाद। निश्चय MSME सेक्टर रे से माने 3-4टी जिनस कुआ जाइछि। गोटे है MSME रो जो कोलैटरल लोन पाई सेटा 100 करोड़ को वृद्धि करा जाइछि। आउ MSME रो एम्प्लॉयमेंट पाई स्किलिंग पाई ट्रेनिंग पाई मध्य दिया जाइछि। टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन पाई जाइछि क्वालिटी मैनेजमेंट पाई दिया जाइछि। तेणु MSME क्षेत्र में बहुत गुड़ाक प्राधान्यता दी जाइछि। 1.52 करोड़ आलोकेशन होइछि। जेतेबेले पूरा फाइनेंस बिलटा को पढ़ा जीवो मुहते बाहुची से जना पड़ो जे बहुत गुड़ाक प्राधान्यता अच्छी सब गुड़ाक तो मु बर्तमान कहवा संभव हेबनी। शुणुले आपण मैंने प्रदीप्त महांती प्रतिक्रिया सीआईआई चेयरमैन विशुद्ध भाव में से बजेट 2024-25 ए संपर्क में उल्लेख करते कौ दिग संपर्क में सेक्टुअल आलोकेशन जाए केमती रिएक्शन तांकर रही ए संपर्क में अधिक चर्चा करने आम सहित अजय दास अच्छा मोर वरिष्ठ सहयोगी कटकू अजय कटकू अधिक आलोचना
कौन आसूची एवं कटक रे केमती जो आपणकर जो लीडर्स माने अछंती विशेष करी इंडस्ट्री लीडर्स सेमानकर कौन प्रतिक्रिया रही संघ मानकर कौन प्रतिक्रिया रही केमी देखुछन से माने 2024-25 बजेट को अविनाश केंद्रीय बजेट आसिला परे एथिरे भल कौन अच्छी खराब कौन अच्छी से संपर्क में आम आलोचना करवा मो सहित अच्छा वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल कुमार अग्रवाल डॉक्टर विमल कुमार अग्रवाल सहित आलोचना सर बजेट को आरंभ केमती देखुं आप फर्स्ट ऑफ ऑल मो नंदीघोष टीवी को धन्यवाद जनाऊँ कि मत अपॉर्चुनिटी देले कि मुझे कही पारि बजेट उपरे आज आम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजेट उपस्थापन कले पार्लियामेंट रे अन्य दिन माने प्रत्येक वर्ष एटा गोटे रूटीन वर्क आ बजेट हैला परे आमे गवर्नमेंट कौन अचीव करूची तापर केबे आलोचना होनी बजेटा गोटे एमती जिनस जेटा गोटे रूटीन वर्क आ लोकों को दिया जाउचे जे एते आमे करिबू बट व्हाट एक्चुअली दे आर अचीविंग एवरी ईयर इट इज नॉट डिस्क्लोज एनीवेयर द्वितीय कथा है आमर बैकबोन होची आमर शेयर मार्केट अबिका इंडिया रे समस्ते से बाटर फ्लोरिश करुँच किंतु जिते गोटे मार्केटा बजेट उपस्थापन बेलू बढ़ुची किंतु उपस्थापन पर जिते कमी जाऊँगी ता माने देयर इज सम नेगेटिविटी इन द बजेट एंड नेगेटिविटी कौन ना कैपिटल गेन टैक्सटा बढ़ई देले बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दुईटार इन्फ्लेशन करदे कौन प्रकार से कौन इनसेंटिव देला भाया मत लगिलानी एसटीटी टू 0.1% से 0.2% से भी आउ थे बढ़ई देले माने चारिआडे देखुचे गवर्नमेंट इज बिकमिंग ए रेवेन्यू माइंडेड दो आमे जानिचु जे गवर्नमेंट आमको ईस्टर्न सेक्टर में आमे जेहेतु ईस्ट रे अच्छु यही आम ओडिशा बंगाल बिहार एम को किसी फाइनेंशियल पैकेज देइचंती बट दैट इज आल्सो नॉट येट अनाउंस्ड एंड लेट द ब्लूप्रिंट कम एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दिस सर ये जो बजेट जितेबाला कहते आम एम्प्लॉयमेंट कथा कहते फार्मिंग सेक्टर कहते एगुड़ा प्रति किसी ध्यान जमी आशा करा सर एम्प्लॉयमेंट तो जहाँ जेनेट होची जिते जाई देश रे इंडस्ट्रियलाइजेशन न होबो प्रोडक्शन न होबो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी होबो नहीं आ मु दिन को दिन आमे जोटा फील करूची जे गरीब लोक आउरी गरीब हेई जाउचंती अमीर लोक आउरी अमीर हेई जाउचंती ता कारण हला अमीर ठारू गवर्नमेंट पैसा नौची गरीब लोक भितर बांटुची तांको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देई पारु नाही कि से एम्प्लॉयमेंट स्कोपटा एटी क्रिएट हो नाही जोटा कि हमें फ्री सब्सिडी करा को दउछु केते पिला केते लोक और आज जो माननीय अर्थ मंत्री ने जिस दिशा में टूरिज्म को हेल्प करने के लिए माने आज हम आश्वस्त हैं कि ओडिशा की विकास द्रुत गति से बढ़ेगी। डबल इंजन का फायदा मिलेगा मिल रही है मतलब ओडिशा की टूरिज्म में पहले जितने प्लान्स नहीं था हम लोग ने थोड़ी से जो भेजे थे बजट के लिए कि हमारी यहाँ 800 करोड़ के थे तो वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर ने बताया था जितना मांगोगे इतना मिलेगा। आज अर्थ मंत्री की ये बोलने से ये श्योर हो गया कि उड़ीसा के लिए डबल इंजन का भरपूर फायदा होगा। चिलिका सबसे बड़ा झील है इंडिया में तो चिलिका झील के विकास के लिए देखिए चिलिका के हमारी 5 डेवलप करने के लिए बर्ड सेंचुरी भी है और इतना बड़ा अच्छा लेक वहाँ पे क्रूज भी चल रही है लेकिन ये गत सरकार ने कुछ के ट्रायल किए थे और सब कुछ बंद पड़ा है। इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक ही साथ सब टूरिज्म प्लेस को डेवलप करेंगे और जितने भी फाइल उन लोगों ने रोक सदाले बड़ बड़ लोक को चाहिए रखिले तांको केमती टैक्स बेनिफिट हो तापाई सदाले चिंता कले तो गरीब लोक सदाले हैरान हेले कहली पूरा गरीब लोक आउरी गरीब हो जाउचंती काना से माने सब्सिडी ऊपर सदाले डिपेंडेंट रहले आ अमीर लोक भाई आज्ञा से तो पैसा वाला लोक तांको किसी असुविधा जी गोटे गाड़ी रखछि ताको तेल पकाया पई असुविधा होछि जे 100टा गाड़ी चलाउछि घरे अछि तांको तेल पई किसी चिंता नाही एटा होछि सब मूल मंत्र सर मुझे गोटे शेष कथा पचारि एथर बीजेपी सरकार ओडिशा रे आसी जे समस्ते आशा करुले बहुत बढ़िया अलटमेंट आसो सबू सेक्टर ओडिशा को किंतु जहाँ आम अतिथि कहते पर्यटन भली छोट छोट सेक्टर छाड़ीदे रियल फाइनेंशियल कि ये हाँ रियल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को किसी अभिज्ञा सुविधा दि जाए किंतु ओडिशार ना अच्छी एथरे ओडिशा बिहार बंगाल एम ईस्टर्न सेक्टर से ना रखी किसी पैकेज देवे बोली घोषणा कर कौन हम से ब्लूप्रिंट आसला कहब भल लगे बजेट लोक सामग्रिक भाव
नहीं सामग्री भाव में भल लगनी इवन फॉर मिडिल मैन को भी एटा टिके आघात करिवो अविनाश आम शुणुले सीधा सीधा जदि कहवा टेक्निकल पॉइंट रु होंतु यार इम्प्लिकेशन पॉइंट रु कहतु गोटे कथा तो निश्चित भाव में वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते जे बजेट जो दुईटा टर्म से सेगुड़िक साधारण लोक किसी फायदा आसी ना गोटे इंपोर्टाट कथा से कहते बजेट आम करुँच आय व्यय चिठा अटकल वर्षे पाई किंतु जहाँ आम चिठा दौरान तादू केते इम्प्लीमेंट है कार्यकारी अजय मोर गोटे कथा जहाँ उल्लेख कले जे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये गोटे बड़ दिग कारण आपण प्रत्येक बढ़िया लाइन से कहले जे गोटे रेवेन्यू मैंडेट रोची जमती मनरे सबुठू मो पैसा आदाय करी प्रत्येक क्षेत्र आपड़ देखो कैपिटल गेन जदि शॉर्ट टर्म रे आपड़ करेंगे 3 वर्ष भितर जड़े घर बिक्री कले आपको 20% दब सुना बिक्री कले 20% दब इक्विटी शेयर सेल कले 20% दब आपंकर किसी भी लैंड जदि आप जमी बिकुंट आप 20% देते तो ये जो कथा जो कथा बढ़िया कथा उल्लेख कले आपड़ एपटे कहते स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 to 75,000 कली 3 लाख पर्यंत ठीक अच्छे बालेश्वर जीवा बालेश्वर मोर अजय अनेक अनेक धन्यवाद आपको आपण आम सहित आलोचना सामिल रे बालेश्वर जीवा बालेश्वर रे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर बेहरा अच्छा राजकिशोर बालेश्वर रो जो माने मार्केट लीडर्स अच्छा बुद्धिजीवी अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा मार्केट विशेषज्ञ सेमानंकर कौन प्रतिक्रिया से केमिति बजेट 2024-25 को देखुंती एवं ये बजेट वास्तविक पॉपुलिस्ट ना ये बजेट रे मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त एमानंक पई चाप रही सहित ओडिशा परिप्रेक्षी से दृष्टिकोण कौन राजकिशोर देखो अविनाश आप कहते प्रकृत में जो बजेट आसला ये बजेट अजय जहाँ आम सहयोगी अजय कहते जमी देखा जाए बजेट जहाँ करने कथा लोकों पाखर टंका आदाय रहा मुख्य उद्देश्य जे लोक जहाँ भी रोजगार करू जहाँ भी खर्च करू से टंका आदाय करने कर भाव आदाय करवा एवं विकासमूलक काम ना खर्च करवा ये सरकार मुख्य उद्देश्य बजेट रे तो ये बजेट जे क्या केमिति लगे से कथा तो भिन्न कथा किंतु साधारण लोकटे कौन पाइब से विषय नहीं कि भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया आसूची बालेश्वर तो बालेश्वर मुझे प्रदीप्त पंडा चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म से कथा हवा जे केमी देखुं आज जो बजेट ए जो ओडिशा को जो स्पेशल कैटेगरी दबा कथा किंतु स्पेशल असिस्टेंस मिलला बिहार और आंध्र को ओडिशा को किंतु सेतिकी मिल पारला नहीं बहुत बहुत दुखर कथा आमर बहुत एक्सपेक्टेशन थिला आम भावुलु निहाती ओडिशा को मान्यता दिज्व आडिशा को आंध्र बिहार भाया नुहे प्रथम फास्ट प्रिफरेन्स ओडिशा को दिज्व मोर आशा थिला एवं बालेश्वरवासी ओडिशावासी भी आशा थिला से आशा चुरमार हो गला किछि मिललानी कौन एथर जो बजेट को आपण केमिति एनालिसिस करिवे ये बजेट रो सब ठीक अच्छी सबुठार बजेट रो ब्यूटी अच्छी मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट आमर निर्मला सीतारमण मैडम जो कहले से 4.9% को आसी से बहुत बढ़िया कथा आईटा ही गोटे जिनस बजेट बहुत भल जिनस अच्छी आउ सब नेगेटिव अवश्य कहीहन कि जी एक्सपेक्ट करते से अच्छी आउ गोटे खाली नेगेटिव अच्छी आम जो कैपिटल मार्केट जो टैक्स रेट गुड़ा बढ़े देते सेटा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से बहुत शेयर मार्केट माइनस हम अदरवाइज पाखा ठीक अच्छे विकसित भारत जेटा थिला से करने चेष्टा है कि सबुठार प्लस पॉइंट है से 4.9% जो फिस्कल डेफिसिट अच्छी जदि यहाँ को आमर जो 24 बजेट उपस्थापन कले से 5.1 से बजेट करते रखिए बोले किंतु एबे जो कले 4.9 अच्छी जदि यही मात्रा बढ़ो जदि यही मात्रा बढ़ो ताले मु भावुँ आउ 3-4 वर्ष पर भारत फिस्कल डेफिसिट न कि फिस्कल सरप्लस को जीव बोली मु आशा करूँ कहीं आजिका दिन मैक्सिमम 15टा कि 20टा कंट्रीज थे सारा वर्ल्ड जो मैंने फिस्कल सरप्लस अच्छा आम भावुचे जदि ये आम किसी दिन किसी वर्ष पर फिस्कल सरप्लस को जापर से साधारण भाव देखा गले आप जो साधारण घरोई लोक भाव जदि आप किसी जिनस किनापी चाहते जहाँ बजार दर है केमी देखुं बजार दर आपको सुहेब ना ये बजेट आपको सहयोग ना बजार दर तो बर्तमान बहु मात्रा बढ़ी चलती तेणु से गरीब मध्यवित्त पारे बहुत कष्ट से हिसाब से गवर्नमेंट तो देखुना मध्यवित्त परिवार बा गरीब लोग जहाँ देखुं बेसी एम्फासिस दौरान सर्विस होल्डर किंतु सहित कॉर्पोरेट दौरान किंतु बिजनेसमैन बिजनेस गवर्नमेंट मैक्सिमम टैक्स पाँच किंतु बेसी टर्चर होता छड़ा द्वितीय कथा गरीब लोक से कौन फैसिलिटी रोचे
ଏବେ ଯେମିତି ଦରଦାମ ବଢ଼ିବାର जो बजार जो दरदाम बढ़िकी रही बजार दरदाम देखिले जो डाली चाउल पाखर आरंभ करके पेट्रोल पर्यंत जहाँ नित्य व्यवहार जो रही ताहा केते प्रभावित करबा आपनको निश्चित प्रभावित करुच्ची कहीं ये तो से हिसाब से इनकमटा हो ना बजेट तार कौन सब्सिडी दवा दरकार बा फैसिलिटी कौन दवा दरकार शिक्षा क्षेत्र जो एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई होती इंडस्ट्री रन कर कौन से असुविधा है स्ट्रेस है ताकू केमती रिलैक्स करेंगे से बोधे बजेट किसी नुआ आसीपे तेणु से एमएसएमई स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कहते कि डिटेलटा आसला जना पड़ मुद्रा लोनटा 10 ରୁ 20 है बहुत सदेशजनक किंतु मुद्रा लोन भी नेला बेलू जो सिविल गोटे रही सिविल हूँ गोटे प्राइवेट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन सी तार बेनिफिट पाऊँ किंतु सिविल गोटे स्कोर उपरे बैंक माने फाइनेंस करूना भल भल एंटरप्रेन्योर खाली सिविल रेटिंग सकाशे से अंडर फाइनेंस होकर ग्रो कर तेणु सिविल रेटिंग टाको से मैंने जदि कोलेटरल भी नौ बेसी नौ जदि सिविल रेटिंगटा भल ना तेणु सिविल रेटिंग शुड बी विड्रॉन से मैंने एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड देखो गोटे इंडस्ट्री फाइनेंस करी से माने 6 मास वर्षे रन कर देखो तार एंटरप्रेन्योर एबिलिटी अच्छी ना ना वर्किंग कैपिटल बैंक रोल कर ना ना यही सब देखिए से एसेस करूँ गोटे एंटरप्रेन्योर जाऊँगी से विषय बैंक जानी गोटे सिविल रिपोर्ट देखिए कहे तो आम तुमको फाइनेंस करूनी यही ड्रपबैक गुड़ाक उठी जा उचित दिस इज माय ऑब्जर्वेशन देवव्रत दास पास्ट ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्मॉल स्केल उपर समस्ते कहले कि स्मॉल स्केल उपर मु बहुत दुखित तार कारण होची जेते बेले जो बजेट होची स्मॉल स्केल उपर गुरुत्व दिया जाउची सब गुड़ा बैंक रे लीक हो जाउची बैंक कौन सी कथा शुणु नहीं हे आरबीआई चेष्टा करुच्ची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेष्टा करुच्ची फाइनेंस डिपार्टमेंट बट बैंक एट दी लेवल ब्रांच लेवल में कौन सी इम्प्रूवमेंट होने तेणु स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ओडिशा रे होने अन्य कथा कहि परिबिनी तेणु आमे गोटे चेम्बर तरफ अन्य एसोसिएशन तरफ गोटे प्रपोजाल देइथिलु एसएफसी जो अच्छी ओडिशा रे ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को डेवलप करा आउ थे चालू कर द्वारा कौन हम कि सबू लोन गोटे छात तलू आप स्मॉल स्केल सबू लोन पाई केवल आप वर्किंग कैपिटल जी कौटी बैंक जितेबाला इडको जमीटा दौर से जमीटा आप रखिकी इजिरे बैंक रु लोन पाई जाइए बैंक रु लोन पाई आउ जो ओसीएफसी लोन दौर प्रत्येकटा जो मेसीनरी दौर से ओसीएफसी पाखे दौर मर्गेज तेणु आप मर्गेज कौन सेटा को एथर कले एसएफसीटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जे पार्लियामेंट एक्ट पास होती एसएफसी ओडिशा रे एसएफसी बंद अन्य जगह एसएफसी परिस्थिति तो भल ना किंतु वन सेकेंड एसएफसीटा को रिवाइव न करी से पुणी थे से बैंक उपर स्मॉल स्केल दायित्व दवा अपेक्षा मुझे आपन को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किचुर आ सिडबी कथाटा कहले सिडबी होची आप विश्वास करेंगे नहीं बैंक भितर सिडबी होची वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से माने किछि फाइनेंस करती नहीं किछि फाइनेंस करेंगे किछि करेंगे आ बर्तमान सबुठु विपज्जनक जिनस कौन जानती सिडबी सागर क्लस्टर टाक जोड़ी देते स्मॉल स्केल जो क्लस्टर होची से क्लस्टर टाक जोड़ी देते सिडबी सागर क्लस्टर को अप्रूव कर सिडबी फाइनेंस कर इज वेरी डिफिकल्ट आर आसु कौन से सिडबी की आउ 14टा काढ़ी कौन ताकू दायित्व देवे कौन करेंगे किंतु स्मॉल स्केल अवस्था ये बजेट भल शुणुते दुर्गा षडंगी आमर जी रिपोर्टर अच्छा से उल्लेख करते देवव्रत दास जो कथा उल्लेख कले जे वर्तमान समय जो माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छा बढ़िया कथा पूर्व से उल्लेख कले सिविल बोले गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप जानते आपंकर लोन आपड़ केते टंका पाइबे सिविल डिसाइड करिवो एवं सिविल गोटे प्राइवेट एंटिटी सी तार स्कोर अनुसार बैंक्स माने निर्भर करछन्ति दुर्भाग्यर कथा बहु फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एमती अच्छा बहु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छा जो मैंने चाहूँगी आगू को बढ़ाई कि दुर्भाग्यर कथा से सुजोग मिल पारना ये कारण सिविल खराब अच्छी तेणु एक गवर्नमेंट निज अधीन को नवा दरकार और से प्रोत्साहित करने दरकार जो विशुद्ध भाव में शुणुते किंतु
बड़ दिग आज बजेट रे आपण जो देखिबे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपण सबुतिरे वर्तमान देखिबे जदि गोटे रेवेन्यू मैंडेट रो थॉट नहीं चलछंती कारण जदि आपण लैंड बिकुछंती गोल्ड बिकुछंती इक्विटी रे भी किछि आपण जदि शेयर सेल करछंती इन दिस 36 मंथ्स आपण को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रो टैक्स 15% थिला से टैक्स वर्तमान 20% को बढ़ा जाइछि बढ़ेबा को पड़िबो तेणु स्वाभाविक भाव में एथर बजेट रे यही जो दिगटी जदि फिस्काल डेफिसिट आपंकर 4.9% को आसी पारिला ये बहुत भल कथा जहाँ गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सहित इन्फ्लेशन रही किंतु आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा आपणकर आपण जो मिडिल क्लास बा निम्न मध्यवित्त एमानंकु जदि खर्च करने हाथ को टंका देवाई आप प्रयास कर हिसाब से आपणकर कैपेक्स बा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एथर जी रखिंट पूर्वापेक्षा 10-11% हाइक होती किंतु आहुरी भी जमी या पूर्व आपंकर यूसीसीआई हूँ कि सीआईआई जो प्रेसिडेंट थे जो रिएक्शन आसूला अधिक बजेटरी आलोकेशन यही क्षेत्र को हबार भी थिला से आम डिटेल्स पढ़ी सारापर कहींपरू सेक्टर वाइज केते आलोकेशन होती तेणु ये 2-3 गुरुत्वपूर्ण दिग जहाँ पर एथर चर्चा आलोचना हबार आवश्यकता रही है अन्य प्रतिक्रिया शुणवा संपूर्ण पक्षपातिता माने एटा सब राजनीतिक दृष्टिकोण केंद्र सरकार कर जेहेतु केंद्र सरकार अन्य दल मान भाड़ा देकर केंद्र सरकार तिष्ठी एवं से मान को संतुष्ट करने से ओडिशा भाड़ा राज्यर स्वार्थ को व्याहत कर अतीत अनेक आम पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक ओडिशा सरकार बारंबार विषय केंद्र को अवगत करोडिशा सरकार भ्यू देती उभय लोकसभा राज्यसभा बारंबार विजु जनता दल सदस्य मैंने प्रसंग को उठे बारंबार ओडिशा सरकार तरफ केंद्र को अनुरोध कर अंततः पोलाभरम प्रोजेक्ट संपर्क में ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखा जाऊ बोली दुर्भाग्यर कथा जे बारंबार ताको अणदेखा कर केंद्र सरकार और आज बजेट रे जो स्वतंत्र व्यवस्था कले पोलाभरम को कंप्लीट करिवार एटा ओडिशा प्रति ओडिशा स्वार्थ प्रति प्रचंड आघात अटे शुण देशर विकास कथा गोटे पटे कहवा अन्य पटे विकास सहित राजनीति को जोड़वा निजर स्थितिर रक्षा निज सरकार को रक्षा करने निजर राजनीतिक स्वार्थ आपण भारत वर्षर इंटीग्रिटी को आपण बाधाप्राप्त कर राज्य राज्य भितर विभेद सृष्टि करुँच प्रभेदर दृष्टिकोण में आप देखुं पक्षपातिता आपण करुँच ये सुस्थ राजनीतिक परंपरा नुहे बा ये सुस्थ भारत को विकसित करिवार सुस्थ परंपरा नुहे बोली मोर निर्दिष्ट मत विजु जनता दल एथिरे निजर असंतोष को व्यक्त करुछि आंध्र पाई केंद्र सरकार घोषणा करि थाई पारंती किंतु आमर भी ओडिशा पाई भी मध्य जीवन रेखा ई दृष्टि जो अंचल ओडिशा रे बुड़ीकी रहुछि बा रहिबो बा जो व्यापक क्षति होबो यार मध्य केंद्र सरकार सुविचार करबा एकांत जरूरी नहले गोटे राज्य को स्वार्थ को देखिक आउटे स्वार्थ को बलि पकई दबा येटा नीति विहीन कार्य बोली मते अनुभव होछि याकू पुनर्विचार केंद्र सरकार करबा एकांत जरूरी अछि पैकेजटा देला परे कहा जीवो आपन को जे मु परीक्षा रे प्रस्तुति रहउछि परीक्षा रे मु सरी रखि देबी रखिला परे सिना हमें जानिबो जे ना आपन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ सेमति हम पैकेजटा जेपन तो न आसीबो पैकेजटा एमती न आसीबो अनेक समय घोषणा होईछि कार्यकारी हे नाही अतीतर अनुभूति रु मु जहा कहउछि पैकेज रो सैंक्शन तार आर्थिक दिगटा सैंक्शन हला परे मंजूरी हला परे ठीक हला बोली कहा जीवो आपण माने प्रतिक्रिया विस्तृत भाव में विभिन्न पॉलिटिकल लोकंकर इंडस्ट्री लीडर्स मार्केट एक्सपर्ट विस्तृत भाव में बजेट परे निर्मला सीतारमण एथर बजेट रे यही जो ओडिशा प्रसंग जदि आम उल्लेख करवा आंध्र प्रदेश बिहार को आपण स्पेशल पैकेज घोषणा कले 15,000 कोटी टंकार आंध्र पाई पैकेज घोषणा ला आसाम रो फ्लड पाई आपण स्वतंत्र भाव में व्यवस्था कले ओडिशा रे बीजेपी सरकार नुआ करी प्रथम करी बीजेपी सरकार आसी आशा करा जाउथिला प्रतिक्रिया रिव्यू बजट स्पीच होएगी रिप्लाई आएगा फाइनेंस मिनिस्टर ओरे विच पंजाब नु जरूर किते ना किते कोई ना कोई ओरे आसे अनाउंसमेंट कीती जावे चाहे कुछ कीती जावे असम तो कहने कि सानू राहत बजट देना चाहिए पंजाब के हालात बहुत खराब है तुसी सब नु फ्लड रिलीफ से असिस्टेंस दिती हिमाचल नु भी दिती और बिहार नु भी दिती लेकिन पंजाब नु भुल गए पंजाब दे विच भी फ्लड आए साडे किसानां दी जमीनां खराब हो गईयां लेकिन पंजाब वास्ते कोई किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं
सांसदंकर प्रतिक्रिया रही जे सबु राज्य को देला पंजाब को कौन अच्छे अविनाश देखु ये गोटे सबु राज्य भितर गोटे विभेद तैयारी करुँचे आपण सहयोगी रहिले टीडीपी आपण जेडीयू रहिले बिहार को आंध्र को उजाड़ी देले तांको बोनाजा ऑफर देले एवं अन्य राज्य पई जेतबेले वर्तमान समय कथा आसीबो ओडिशा प्रकृत रे कोन पाइला टूरिज्म रे आपण कोन करिवे निर्देश भाव रूपरेख नाही सेठी आपण संख्या अंक सहित जेतबेले आपण मेडिकल कॉलेज ठारू आरंभ करी एक्सप्रेस हाईवे सेठिकार जो टूरिज्म प्रोजेक्ट अछि ता पई चित्र एवं पुनर्गठन एक्ट अनुसार कार्यक्रम सबू कथा को आपण अजाड़ी देले एवं अन्य राज्य भितर विभेद तैयारी करिवो आ संघीय व्यवस्था रे जेतबेले ए विभेद गुड़िक धीरे धीरे प्रतिक्रिया सामना को आसे ये आ गोटे बड़ रोष अविनाश तैयारी करिवो सारा भारत वर्ष रे निश्चित भाव में आउ टिके उल्लेख करया पई चाहूची वर्तमान समय रे वर्तमान आपण जदि देखिबे तबे मु वर्तमान समय रे तुमनाथ पंडा आम सहित अच्छा विजु जनता दल मुखपात्र तथा नेता एवं विधुभूषण नायक आम सहित अच्छा मार्केट विशेषज्ञ उभय को स्वागत करुच्ची आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना को श्रीयुक्त नायक आपण पाखु आलोचना आरंभ करने चाहिए 2024-25 ये आर्थिक वर्ष रे ये बजेट आशा करा इंटरिम बजेट पर एथर बजेट पॉपुलिस्ट हम ये बजेट को आपण किभली भाव में देखती कौ सेक्टरल आलोकेशन आपण को अधिक ठीक लगी कौ सेक्टर को आहरी आवश्यकता थिला एवं वर्तमान चैलेंजेस को दृष्टि रखी मुद्रास्फीति को नियंत्रण को आनिबा फिस्कल डेफिसिट 4.9% रखा निर्मला सीतारमण आज बजेट रे कहिसेंती ये सबूर वास्तवता केते बोली आपण अनुभव करछन नहीं देखंतु आमे जेते बेले गोटे बजेटटा हुए इंटरिम बजेट आ एटा आपनकर हला रेगुलर बजेट इंटरिम बजेट जो सरकार आनिथिले सेम सरकार आनिचंती फाइनल बजेट बा रेगुलर बजेट आसी एबे कथा होची जे जो बजेट रो आपण देखिबे जे इंटरिम बजेट रे 47 लाख ऑड करोड़ रो साइज ऑफ द बजेट थिला सेटा एबे 48 लाख ऑड करोड़ हिची दैट मीन्स बजेटरी एवं आपण जदी 23-24 वर्ष रो एक्चुअल देखिबे दैट वाज 44 लाख ऑड करोड़ तेणु पाखा पाखी 4 लाख कोटी टंका रो अधिका साइज बजेट रे इंक्रीज करा जाईछि किंतु जदि सेक्टोरियल आलोकेशन को देखिए इंटरिम आउ ए बजेट भितर विशेष किसी पार्थक्य ना राइट जमती डिफेन्स एजुकेशन एग्रीकल्चर रेलवे पाखापाखी सेम आलोकेशन अच्छी बहुत गुड़े इंटरिम आउ ए बजेट ना किंतु इम्पोर्टेंट जिनस अच्छी जे लोक कहते जे जो दर दाम आमे जेते बेले साधारण लोकटे दर दाम आपणकर परिबा हो ग्रोसरी हो एवं गैस हो ये जो दर दाम जोगु लोक गोटे प्रकार रिहाती आशा करुले तो रिहाती माने प्रत्यक्ष रिहाती हो पारे और परोक्ष रिहाती हो पारे बजेट माध्यम रे प्रत्यक्ष रिहाती है सरकार जदि किसी सब्सिडी डायरेक्टली जनसाधारण को देवे जमती गैस रे सब्सिडी दे पारि एवं परोक्ष रिहाती होची जे सरकार जदि कोनोसी इनकम टैक्स स्लैब रे बा इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब रे चेंज करिवे ताहले कमोडिटी रो प्राइस किंबा लोकों को हाथ रे खर्च करबा पई किछरा सरप्लस रहइबो का दाम तो कम कर दोगे आप टिके आम आदमी की जरूरत का कैसे पूरा करोगे कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये पूरी तरह निराश करने वाला मैं तो इतना कहूँगा झुंझुना पकड़ाया है बिहार को आंध्रा को अगर मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए वफादार हैं तो इन्हें चाहिए कि हर हालत में ये समर्थन वापस लें और बाहर आए केन्द्र सीधासलख भाव में पार्लियामेंट बाहर प्रतिक्रिया आम कथा होते सर जो कथा आप कहले लोकों हाथ को टंका जावा दरकार तो से लोकों हाथ को टंका देवाई रूराल इकोनोमी को आहरी बढ़ावाई जो कथा उल्लेख करते जिते लोकों हाथ को टंका जीवार दुईटा जिनस आपणकर केते आपण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करुचंती किंबा लोक जो रोजगार करुचंती से रोजगार को आपण कमोडिटी प्राइस रेगुलेट करी तांको हाथ रे केते सरप्लस क्रिएट कर तेणु सरकार जो डायरेक्ट टैक्स रे किछिटा न्यू स्लैब रे चेंजेस आनिचंती आ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 को 75,000 करचंती स्लैब रे 3 लाख पर्यंत 3 लाख रु 7 लाख जो 6 लाख स्लैब को 7 लाख पर्यंत 5% 7 रु 10 को नहींचंती 10% 10 रु 12 को 15 12 रु 15 पर्यंत 20 एवं 15 रु सियाड़ को 30% जो स्लैब रे सामान्य चेंज करचंती स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड को पई बढ़ाइचंती सेक्शन 16 रे एटा को देखिले लोकों को हाथ में 15-17 हजार टंकार टैक्स डिफरेन्स आसो सो मास को गोटे 1,500 टंका सरप्लस जो दरदाम बढ़ी अच्छी आडिक्वेट नुहे एथिरे आउ टिके चेंजेस करा जाई पारि थांता किंबा डायरेक्ट सब्सिडी माध्यम रे सरकार जोटा बेसिक जिनस होची आपनकर रंधन गैस हो
ये सब जिनस सरकार करते जोटा करना किंतु दुईटा हुए आज्ञा आम जो पॉपुलिस्ट बजेट और ग्रोथ भितर डिफरेन्स अच्छी जो बजेटा ग्रोथ ओरिएंटेड हम से सब पॉपुलिस्ट हम नुहे इंटरिम बजेटा पॉपुलिस्ट हो पारे किंतु जेतेबेले इट इज ए रेगुलर बजेट इलेक्शन एवं सरी सरकार पॉपुलिस्ट बजेट नुह इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट अच्छी ये बजेट को आप माइक्रो लेवल अपेक्षा मैक्रो लेवल रे पर्सपेक्टिव जब इभालुएट करेंगे दुई तीन टा जिनस इंपोर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरिम रे से माने गोटे कॉर्पस फंड क्रिएट करते 1 लाख करोड़ सेटा को एतरे बजेट की सर पॉपुलिस्ट बजेट करेंगे जे किंतु देशर मौलिक मुद्दा को तो आप एड्रेस करेंगे इन्फ्लेशन को एड्रेस आपको करिया पड़ो आपन को बेरोजगारी को भल भाव एड्रेस करिया पड़ो आप खाली इंटर्नशिप कहीदेवे 5-6 मास कोटी इंटर्नशिप देदेवे तापर पुणी कौन व्यवस्था से जो जॉब क्रिएशन तापर भी ध्यान देवा पड़ो जॉब क्रिएशन टा होची आज्ञा जॉब दी प्रकार आपन जदि सेल्फ एम्प्लॉयड को एनकरेज कर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे स्किल डेवलपमेंट टा को गुरुत्व दिया जाए केतेबेले जेतेबेले मोर स्किल अपस्किलिंग हुए जड़े अपस्किलिंग है पर से डिसाइड कर व्वेदर मु एम्प्लॉयमेंट करी मु निजे सेल्फ एम्प्लॉयड है तेणु स्किल डेवलपमेंट अपस्किलिंग टा बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सी जगह जितेबाला आप ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी बढ़ाऊँच से एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी भी बढ़ो एवं सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ो तेणु किंतु आपन जो कहले जे लोकंकर पाई जदि आमे जो दरदाम अच्छी जो प्रकार लोक मैंने चैलेंजेस फेस कर रोजगार आपण पाखे रोजगार पाई सरकार पाखे ये बजेट रे कौन प्रकार सुजोग अच्छी कि नहीं आपड़ जदि देखिए जे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एवं जो प्रकार से माने कहते जे किछिटा आइडेंटिफाइड सिटी रे से माने आपणकर रेडी टू स्टार्ट इंडस्ट्री पाई इंफ्रास्ट्रक्चर देबे एवं तापर किछिटा सिटी रे से माने किछि गोटे सिटी रे कहउचंती जो जगह से माने सिटी एवं पेरीफेरी रे से माने इंडस्ट्रियल हब तैयारी करिवे एवं आ गोटे देखंतु जे लास्ट ईयर रे से माने जोटा कहितले आपनकर आपण देखिबे जे एक्सपोर्ट जोटा आपनकर माराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रे 60,000 करोड़ एक्सपोर्ट हेतला ता पूर्व सेटा 50,000 कोटी थिला ताकू से माने आउटिके उत्साहित कर एक्सपोर्ट टाकू एनकरेज करने से इंडस्ट्री रिलेटेड इंपोर्ट उपरे से माने गुड़ाए बेसीडी किछिटा को एग्जाम करचंती आ किछिटा को लोअर करचंती दैट मीन्स एक्सपोर्ट को इनडायरेक्ट वे एनकरेज करा होची ए जदि एक्सपोर्ट एनकरेज होची ताले आपण देखियो जे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो जदि स्केल अप एक्टिविटी बढ़ी गला ताले एम्प्लॉयबिलिटी बढ़िबो तेणु एमती भाव में डायरेक्ट भाव में केते एम्प्लॉयमेंट एवं आ गोटे भी अच्छी आपणकर जो माने गोटे मासर ईपीएफ टाकू सरकार कंट्रीब्यूट करे प्राइवेट सेक्टर जदि एम्प्लॉयमेंट देबे अप टू 30 लाख पर्यंत प्राइवेट सेक्टर रे लोक माने जदि एम्प्लॉयड होंती ताले तांकर ईपीएफ टाकू सरकार 1 मंथ पर्यंत से खर्च टाकू वहन करेंगे ये गोटे बढ़िया कथा दुई तीन गुरुत्वपूर्ण दिग संपर्क आप उल्लेख कले से प्रसंग को मुझे जे जितेबले कहुच्छी एथर सरकार फोकस एरिया सरकार कहते द फोकस ऑफ द बजेट इज ऑन एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एमएसएमई एंड द मिडिल क्लास ये चारोटी विषय को नहीं मु श्रीयुक्त तुमनाथ पंडा आपण पाक आसापी चाहूँगी वर्तमान परिप्रेक्षी में 2024-25 बजेट रे जो प्रसंग को नहीं आम आलोचना कर एमएसएमई क्षुद्र मध्यम अनुशिल्प आंसिलारी इंडस्ट्री कथा जो आम चर्चा करती आम सब कॉर्पोरेट को देखती से अनेक गुड़िए व्यवस्था करती यही सेक्टरटी कोविड पर एते मात्रा अवहेलित होता आपण एबे दृष्टि दौरान किंतु ता भीतर भी आउ गोटे बड़ दिग रही है आपन को जो बैंक्स माने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी से जितेबाला ऋण दौरान से अनेक प्रकार प्रतिबंधक रोचे तेणु एमएसएमई कार आज स्थिति आसंता दिन स्थिति और यही क्षेत्र में रोजगार सृष्टि ये तीनोटी दिग को आप देखो ये एमएसएमई सेक्टर में मु देखुली केवल खुचरा लोन टाक 10 लाख रु 20 लाख कर देइछंती आ एमएसएमई रे जति आशा करा जाउतला से भलिया किछि रिफ्लेक्शन अवश्य डिटेल देखिला पर जना पड़िबो किंतु फंडामेंटली एबे जदि देखिबे आपण ओवरऑल पिक्चर देखिबे एमएसएमई रे सेमति किछु उत्साहजनक स्थिति नाही बजेट को गोटे बैलेंस करिवे बोली कि इन्फ्लेशन टाकू माने कंट्रोल करिवे बोली कि जो भाया कहते जे आप ग्रोथ पॉपुलिस्ट बजेट आउ ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट यहाँ एक्चुअली पॉपुलिस्ट बजेट न हो पारे किंतु जहाँ अविनाश बाबू कहते जे लोक को जहाँ जहाँ कमिटमेंट थिला से अनुसार एमएसएमई सेक्टर में कहीं आम तो किसी देखिपारू कि आउ जो ईपीएफ रे कंट्रीब्यूशन किसी देदेले यूथ मैंने स्किलिंग ठीक अच्छे स्किलिंग करवाटा भल किंतु एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में केवल आप करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जहाँ जहाँ आपंकर कमिटमेंट थिला इलेक्शन पूर्व कहीं बजेट तो किसी रिफ्लेक्ट करूनी किसी एवं एमएसएमई सेक्टर विशेषकर देखिए जो कॉरिडोर कथा कहते
आमर एपटे जो बिजु एक्सप्रेस वे होता सेपटे आमर पोटेंशियल अच्छी सेकेंड माने बिजु एक्सप्रेस वे 1 एवं 2 जोटा अच्छी से कॉरिडोर विषय तो किसी कहले बिहार को 4टा एक्सप्रेस वे देइचंती किंतु सेठे एमएसएमई सेक्टर रु जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाई बोली जो पोटेंशियल अच्छी ता विषय जब चाहिए टिके अनाउंसमेंट कर दे पारते ये आप स्ट्रीट फूड हब करेंगे बोली 100टा सिटी रे कहउछंती किंतु एमएसएमई सेक्टर रे स्पेसिफिकली जदि ओडिशा पे किसी करथांते आमे निश्चित आमे खुशी था सेहिते तीनोटी दिग मु उल्लेख कर दवा चाहूँ स्कीम ए स्कीम बी स्कीम सी एवं स्कीम डी एथिरे जो कथा सार उल्लेख करते विदुषा 20 लाख यूथ टू बी स्किल्ड ओवर ए 5 years of period 1000 industrial training institutes to be upgraded in hub and spoke arrangements new scheme for internship in 500 top companies to 1 crore youth in next 5 years तापरे जो ईपीएफओ कथा मध्ये उल्लेख करा जाउथिला जे आपनकर गवर्नमेंट रो भी सेतरे कंट्रीब्यूशन रहइबो मु सोनाली साहू मध्ये हम सहित अछंती कांग्रेस रो मुखपात्र तथा नेत्री मु ताऊ स्वागत करिया पई चाहूची हम सहित विश्वदेव दास मध्ये खूब शीघ्र शामिल हेबे तांकु मध्ये स्वागत करिया पई चाहूची अर्थनीति विशेषज्ञ सोनाली मैडम आसीबे आपनक पाकू शशि थरूर किस समय तक प्रतिक्रिया आसला से कहले जे ग्रामीण अर्थनीति पई मनरेगा जितेबाला आरंभ होता से भाई किसी थट कांग्रेस थिला जो आमे ग्रामीण स्तर में लोक रोजगार दबार एक व्यवस्था करूँ कि परवर्ती समय तार आलोकेशन कमी कमी गला एथर बजेट में सेमती किसी फोकस है ना कांग्रेस एथर बजेट को केमी देखुची एवं आपण आशा करुछंती कि जे ये बजेट साधारण लोकों बा निम्न मध्यवित्त वर्गर लोकों अनेक हित साधन कर देखो ये बजेट हूँ सरकार बचाओ बजेट पूरा स्पष्ट जना पड़ जाऊँगी जे को भाव में बिहार और आंध्र प्रदेश उपरे केते मात्रा रे माने ताको अनुकंपा देइछंती सहायता बेसी करिछंती सेथरु तो जना पड़ जाउछि गोटे कथा हला जे सरकारकर दीर्घ मियादी जो योजना रहिबा कथा सेथरि जना पड़ू नाही हां गोटे कथा स्पष्ट जना पड़ुछि बजेट रु जे भय आ भ्रम केमिति ए सरकार रे भरिकी रहिछि मोदी पाखरे भरिकी रहिछि ता तो स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि किछि समय पूर्व आसवा पूर्व मोर सहयोगी बढ़िया कथा कहूतिले निजुक्ति एम्प्लॉयमेंट जोड़ाक अच्छी एमएसएमई उपरे कहूतिले मु खाली गोटे कथा आपन को एठी माने कहि रखुछि जे आरटीआई तथ्य रिसेंटली आमे मगैथिलु 2016 रु 2021 मध्य देश रे 24 लाख क्षुद्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाइछि सेगुडी को केमती माने पुनरुद्धार करा जिवो जदि आपण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेबे नाही जोड़ाक रही तार पुनरुद्धार पई आपण चेष्टा करिवे नाही तो निजुक्ति केमती बढ़िबो आ गोटे बढ़िया प्रहेलिका करा जाइछि जे गोटे पटे कुहा जाइछि जे 5 वर्ष रे 4 कोटी 1 लाख युवक युवती को चाकरी देबे आपण अन्य पटे देखिबे 5 वर्ष रे 10 लाख युवक युवती को से माने तालीम बा ट्रेनिंग दबा पई योजना करछंती बोली जना पड़ुछि आपण एई दीटा एक को जदि आपण कंपेयर करिवे आपण स्पष्ट भाव में जानि जिवे जे सरकार को भली भाव में युवक युवती मानक सहित माने मिछ आ जुमला पुणी जुमला करबा पई गोटे चक्रांत करिछि सबुठु गुरुत्वपूर्ण अविनाश बाबू सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जने ओडिया महिला हिसाब रे जे ओडिसा बासी जो भूल करिछंती बोध हुए से दंड आमे आज पाइबु ओडिशावासी त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति आज ओडिशा सबो क्षेत्र वंचित हला 20 सांसद चयन करिकी पठागला निर्वाचित हेले संसद को गले किंतु ओडिशा को उपेक्षा करागला पोलाभरम प्रकल्प पई पूरा अजाड़ी दे गले मोदी सरकार किंतु पोलाभरम प्रकल्प पई कोरापुट बासिंदा जो विस्थापित होते सेमानकु अणदेखा गला सेमाने केमती कंपेनसेशन पाइबे सेमानकर केमती थैतान करा जिवो ता पई कोनोसी व्यवस्था करागला नहीं बजेट रे एतरो स्पष्ट जना पड़ुची जे ओडिशा को को भली भाव रे उपेक्षा कराइछि आ गोटे कथा होची टूरिज्म रे डेवलप करिवे बोली कहिले ओडिशा रे किंतु सेतरे जना पड़िबो स्लैब देखिले कि को क्षेत्र को सामने प्राधान्य देबे न देबे ता एक भिन्न कथा जे आपण बाहरु पर्यटक आसीबे आपण से भली भाव रे रोड बढ़ेबे रेलवे बढ़ेबे एयरवेज बढ़ेबे ता पई व्यवस्था काई ठीक है जेति के टका आपण कहया कथा जे केवल माने आपण प्रोविजन रखी चंती सरकार आसिले ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसिला परे जेतेबेले मान्यवर मुख्यमंत्री एवं 2 जण उपमुख्यमंत्री 3 दिन दिल्ली को गले एवं सेठी मान्यवर प्रधानमंत्री को आरंभ कर सबु विभाग मंत्री मान मंत्रालय मिसिले एवं सेठी कहिले दिल्ली रे कहिले
जे आम कैपिटल रीजन रिंग रोड आमर एटी कोस्टल हाईवे जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट अच्छी आम यही वर्ष बजेट रे एथर आम अधिक रु अधिक अनुदान पाइबू लोके राज्यवासी भी विश्वास कले कहीं सद्य निर्वाचन सरी 21 रु 20 एमपी बीजेपी पाई एवं 3 दिन डेरा पकईकि प्रधानमंत्री पाखे उपमुख्यमंत्री 2 जन को नहीं जाइए मुख्यमंत्री किंतु आज बजेट रे आप देखुंत ओडिशा आपण साहाय्य करंतु आंध्र को बिहार को आमर कहबार नहीं आपण निजे रखिथिले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देबे बोली ठीक अछि देई परिबेनी आउ 5टा स्टेट को पैकेज दउचंती सिक्किम अरुणाचल प्रदेश को आपण डिजास्टर मैनेजमेंट पाई दउचंती ओडिशा रे आपण जानिचंती प्रत्येक एवरी अल्टरनेटिव ईयर रे हमें साइक्लोन फेस करछे गोटे साइक्लोन रेजिलेंट इकोसिस्टम डेवलप करिया पे 10 वर्ष होला प्रस्ताव पड़ी रही जे अंडरग्राउंड केबलिंग कोस्टल रीजन तक करिया पे टंकाटे भी अनुदान नहीं करथन जे ओडिशा रे निर्वाचन बेले बीजेपी जो जो प्रतिश्रुति देइतिला आशा करा जाउतिला 2024-25 पूर्णांग बजेट रे सेथरु किछि मात्र सोनाली मैडम जहा कले आपण जो कथा कले मु विशुद्ध भाव रे सेही प्रसंग को आसीबी डॉक्टर विश्वदेव दास समस्त अछन डॉक्टर दास मु एमएसएमई कथा आलोचना करथुली जेहेतु आपण सेही सेक्टर रु आसुचंती एवं सेही सेक्टर आपणकर दीर्घ 3 दशंधि अभिज्ञता जो क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई पई एवं कोलेटरल एथर बा थर्ड पार्टी गारंटी नाही ये गोटे व्यवस्था करागला एवं स्ट्रेस पीरियड पई गोटे व्यवस्था मध्य करागला एनहांस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन टीआरडीएस मध्य करा जायछि एमएसएमई को कहा जाउछि जे आसंता 3-4 वर्ष मध्य तार पूर्ववत स्थिति को फेरे आना जिवो एथर आपणकर जहाँ जहाँ डिमांड्स थिला कलिंग चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पक्षरु से सब अनेकांश पूर्ण हैला भली बने होछि कि नहीं शुणु एमएसएमई की जो रिवाइव पाई देइचंती भारत वर्ष रे एमएसएमई रिवाइव हवा गोटे बहुत दुखर कथा माने एते सहज कथा नुहे कहीं ना आमे जेतेबेले WTO रे साइन कर दे कि आसिले जेतेबेले मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थिले आमे वर्ल्ड को गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड न दे किना आमे ओपन इकोनॉमी कर देले ओपन इकोनॉमी जेतेबेले कर देले आपण देखंतु डोमेस्टिक सेक्टर को कौनसी प्रकार प्रोटेक्शन दिया गलानी आजिका डेट रे आपण देखिबे जोडा फॉरेन ब्रांड रो मोबाइल फोन आसुची सेही फोन ओडाकर जदी आपण लोकली तयारी करिवे आपणकर ये कस्टिंग भी एक्जाक्टली से आसो कहीं ये आप इंपोर्ट ड्यूटी दौरान ये आप जीएसटी देवे तेणु सरकार जदि लोकल इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग सपोर्ट न देवे जेकोसी गवर्नमेंट आसतु गोटे जदि विजन प्लान को न नहीं जदि न करेंगे ताहले आमर एमएसएमई रो ग्रोथ हो पारिबनी आमे माने मोर और मोर आमे जाऊे माने फैंटासाइजिंग वर्ल्ड आड़ को जाऊे आमको बेसी दरकार नहीं बॉम्बे दिल्ली भितर 8 वेर हाईवे आमको बेसी दरकार प्रति जिले में गोटे गोटे इंडस्ट्रियल हब कि गोटे हॉस्पिटल आमको बेसी दरकार पिला मानको पाठ पढ़ाई नंबर ऑफ कॉलेजेस आमको स्किल मैन पावर निहाती दरकार आ बैंक जो कहते जे बिना कोलेट्रल रे 10 कोटी टंका लास्ट बजेट रे भी सेमती थिला 3 कोटी टंका बिना बजेट बिना कोलेट्रल सिक्यूरिटी केतोटी लोक पाइचंती तापर एमएसएमई रो परिभाषा ही बदली दिया जायछि निकट अतीत रे एमएसएमई आगुरु थिला जहार इन्वेस्टमेंट 50 लाख टंका तले वर्तमान इन्वेस्टमेंट इज मटेरियल जहार सेल्स 200 कोटी कि 100 कोटी टंका तले अच्छी से एमएसएमई आसीजो जी 100 कोटी टंका तलकू जहार सेल थिबो आपण मते कोंतु से को दृष्टि एमएसएमई हला एमएसएमई आमे गला 2 दिन तले आलोचना करथिले आमर विलेज रु जो बाहरुची पिजुली बाहरुची किंबा आमर कदली बाहरुची आमे वैल्यू एडिशन करिकिना आमे आम सिस्टम को सेते तगड़ा करिकिना इंडिपेंडेंस पर ताको बंचे की रखिथिले एबे कौन है जो सब धरत खदी बोर्ड पाखे गोटे पावर थिला से गाँव रु कलेक्शन करके आणुला बिकुला प्रोसेसिंग करके बिकुला आमे से सब को प्राइवेटाइज करते से मनमोहन सिंह हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट हूँ सब को प्राइवेटाइज करते तेणु जिनस होमर जो पुराना इकोसिस्टम थिला डुअल इकोनॉमी थिला ताकू किछि मात्रा रे जदि आमे रिस्टोर करिबा ताले एमएसएमई पुणी आज्ञा विधु सर आसबे आपण पाकू आम सहित विधुभूषण नायक अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,000 कोटी टंकार 11.11% ग्रोथ है मु निर्दिष्ट भाव जानापी चाहूँगी आमे जी आसेट क्रिएट कर से आसेट आमे केते परसेंट तार व्यवहार कर इन रिटर्न आमको केते आसूची 2 एवं तार रियल एस्टेट सेक्टर सहित सीधासलख संपृक्ति को आप अनुभव कर सेक्टर टी वास्तविक ग्रोथ ओरिएंटेड भली आप अनुभव कर ये गोटे आगामी समय गोटे लाइबिलिटी हम इंडियन इकोनॉमी
नहीं देखंतु जेतेबेले बजेट रो दीटा जिनस थाए आमे बजेट रे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर थाए आपण देखिबे जो गत 23-24 बजेट रे कैपिटल एक्सपेंडिचर जेतेबेले 44 लाख करोड़ रो टोटल एक्सपेंडिचर थिला सेतिरे कैपिटल एक्सपेंडिचर 9 odd लाख रे थिला ए बजेट रे सेटा को 11.11 लाख करोड़ करचंती सो कंपैरेटिवली 11% इंक्रीज करचंती कंपेयर टू लास्ट ईयर बजेट कैपिटल एक्सपेंडिचर रे आपनकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम आमे कहूँ आज्ञा ओवरब्रिज दरकार आमे कहूँ आज्ञा भल कम्युनिकेशन दरकार टेलीकॉम हो आपनकर एयरपोर्ट हो हॉस्पिटल्स आपन इंस्टीट्यूशंस हो तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पाई बजेटरी आलोकेशन 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर रु अधिक आपन जदि 48 लाख रु 11 लाख टंका देखिबे इट इज नियरिंग 22%। तेणु क्वांटम ऑफ द आलोकेशन बहुत भल अच्छी इट डिपेंड्स आपण ताकू को सेक्टर रे को टाइप रो एसेट क्रिएट करचंती हेल्थ सेक्टर को कौन दउचंती एयरपोर्ट को कौन दउचंती रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पाई कौन दउच रेलवे बजेट परे ताकू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पाई कौन दउचंती एवं जोटी इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सब अच्छी आईसीएमआर रहिला आपनकर अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अच्छी सेमान को आपण केमती आलोकेट करूचंती एवं सेथिरे आ गोटे देखिबे जे स्टेट गवर्नमेंट मान को भी लॉन्ग टर्म जदि आपण कोनोसी स्पेसिफिक 1.5 लाख करोड़ रो से माने कहउचंती जे सेटा 75,000 करोड़ थिला जे जदि आपण कैपिटल एक्सपेंडिचर कोनोसी पर्टिकुलर आपण प्रोजेक्ट आनिबे स्कीम आनिबे सेथिरे भी लॉन्ग टर्म नो इंटरेस्ट बियरिंग 50 वर्ष लॉन्ग टर्म भी सरकार ग्रांट देबे ई कैपिटल एक्सपेंडिचर भितरे अछि तो इट इज लोकों को पाई जदि आपणकर सेक्टर स्पेसिफिक आपण कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करिवे जोतरे दुईटा जिंस हो इट विल क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी जेतेबेले आपण जो कोनोसी जेतेबेले आपण एक्सपेंडिचर इनकर करिवे इकोनॉमी इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर कले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो एम्प्लॉयबिलिटी आसी सारला पर लॉन्ग टर्म जो एसेट रु आपण बेनिफिट डिराइव करिवे जो सेक्टर स्पेसिफिक रे तेणु बजेटरी एलोकेशन इज एनकरेजिंग एटा देखिबार अछि जे लास्ट टाइम जेमती 9 लाख करोड़ रे को प्रकार इंप्लीमेंटेशन हेतिला एबे 11 लाख कोटी टंका को सेक्टर को से माने देबे स्पेसिफिकली एवं तार की प्रकार बेनिफिट जनसाधारण को आसीबो किंतु बजेटरी पर्सपेक्टिव माइक्रो हिसाब रे जदि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव रे इवैल्यूएट करिवे एटा गोटे वेलकम निश्चित भाव में मु एही प्रसंग रे आसीबी सुक्त तुमनाथ पंडा आपन पाखु 10,244 कोटी टंका गत थर आलोकेशन ओडिसा रे रेलवे क्षेत्र किंतु सेथिरु खर्च केते टंका हला 2670 कोटी टंका 2500 कोटी टंका पाखापाखि पर पाखापाखि 72% आपन कैपिटल जोटा नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हम और आउ थरे सेपरेट एलोकेशन हम यही क्षेत्र में आपण केवल आलोक मुझे जानापी चाहूँगी गोटेला टेलीकॉम गोटेला रेलवे गोटेला बैंकिंग जो तीनोटी सेंट्रल आलोकेशन बा सेंट्राली आपणकर आमर टेली डेंसिटी केते अछि नेशनल एवरेज केते अछि आमर रेलवे रो डेंसिटी केते अछि रेलवे ट्रैक निर्माण रे नेशनल केते अछि तो स्वाभाविक भाव में ओडिशा एसबु क्षेत्र में आज भी पछरे नाही कि एवं एथिपाई जेतिकी फंड्स आसीबा कथा आपण ताको फेब्रुआरी मास रिलीज करिवे मार्च आपणकर लास्ट 31 हबो आपणकर ईयर एंड केमती संभवपर हम तेणु यही व्यवस्थार भी सरलीकरण आवश्यकता अच्छी ना देखु ये सरकार मोदी गवर्नमेंट 3.0 आसला प्रथम माननीय प्रधानमंत्री को आप उक्तिरा देखिथिबे ओडिशा विल बी द ग्रोथ इंजिन बोली कहिथिले तापर तो जहाँ मुझे कहली आप समस्त मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री गले बोलिकी एबे रेलवे सेक्टर रे जदि आम डिटेल देखिने ये जो शब्द संयोजना करके आप गला 5 वर्ष है देखिए प्रत्येक वर्ष बजेटरी आलोकेशन मैक्सिमम कर दियंती एवं कही दियंती जे पूर्वर सरकार माने 500 कोटी 300 कोटी दौले आम 10,000 कोटी देदेलु किंतु आपड़ देखिले गला वर्ष नुह लगातार भाव गला 5 वर्ष देखिए एमानंकर रेलवे क्षेत्र में आलोकेशन 1/4 भी खर्च करना सेटा कैरी फॉरवर्ड हो नेक्स्ट ईयर को आउ 1,500 कोटी टका मिसे देकरी आम एथर 10,000 करदेलु 8,000 करदेलु एमती फिगर दियंती तो ये जगलरी ऑफ वर्ड्स खाली कहवा छड़ा एमानंकर रियल एक्सपेंडिचर पार्ट को आसबे आमर गोटे असुविधा होची आज्ञा एक्सपर्ट माने अछंती बजेटरी आलोकेशन बजेट अति सुंदर भाव हो जाए बहुत सुंदर लगे जो हमको यही सेक्टर रे दिगला बोलिकी ताको इम्प्लीमेंट कला बेले कौ सेक्टर रे केते एक्चुअली खर्च होची एक्चुअल्स ता विषय आम ध्यान दौना ताफल कौन हुए सरकार बजेट आलोकेशन एथर कहले आप जो जिन रेज कले गला थर कौन बैंक
आप हार्डली 5-3% लोक बेनिफिट पाइबे कोलाट्रल सिक्योरिटी न थी लोन मिलटा कौन सी बैंक एंटरटेन करूना बैंकर मानक पचारे कहते कौन आम एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्किन वी विल फाइनेंस यू से मोटे राजी होना कोलाट्रल सिक्योरिटी खाई अधिकार सिक्योरिटी मागुन से सरकार कहते कौन जे बिना सिक्योरिटी आम लोन देव से टाइप रेलवे क्षेत्र में आमको जो अवहेला होती एथर जदि किसी देइथिबे हम तो डिटेल देखिनु जदि किसी देइथिबे किसी ओडिशा को ताहाले मु भाबुची ओडिशावासी प्रति एटलिस्ट आउ तो किसी देलेनी रेलवे रे टिके हेले न्याय प्रदान करिवे बोली काहेकि ना रेलवे क्षेत्र में आपण देखतो एंटायर ईस्टर्न कॉरिडोर रे आपण देखिबे रेल डेंसिटी रे होची हम सबटु लोएस्ट झारखंड टू कम वेस्ट बंगाल टू कम बिहार टू कम सेमिति टेली डेंसिटी रे देखिबे हमर दुर्भाग्य होची हमर मंत्री हम राज्य किंतु सेठी टेली डेंसिटी बाबद में बड़ बड़ चिकन चिकन कथा कहती बड़ बड़ भाषण दियंती किंतु आपण एबे भी देखिए जाकि आज्ञा 4G कथा छाड़ दियंतु 2G आसुनी रूरल एरिया रे जो आदिवासी एरिया रे से सदा बेले कहते आम एत टावर बसई दूचु एति प्रोविजन रखिदेचु बजेट आलोचना करदेलु किंतु प्रकृत में आज्ञा कम बेलू से किसी हो पारुनी जो जहाँफल आपड़ देखिए राउरकेला जदि भुवनेश्वर आसबे आपण केते जगह मोबाइल नेटवर्क आप पाइपर मेन रोड रे एनएच रे ठीक अच्छे केते जगह कटुची तेणु से हिसाब से आम खाली मु देखनी रेलवे आलोकेशन डिटेलटा देखला कहवा जदि प्रत्येक वर्ष भाया 10,000 12,000 कोटी ए वर्ष दे 2,000-2,500 कोटी टका खर्च हो ना इंटरिम रे जहा थिला 10,536 कोटी टका स्पेसिफिकली फॉर रेलवे प्रोजेक्ट आज्ञा रेगुलर बजेट रे भी सेते खर्च करि पारुनांती माने ठीक है हम देखिबा सोनाली मैडम हमसे दोछथि मैडम आ गुटी बड़ दिग हला जे टूरिज्म जो कथा हम आलोचना करथले टेक्सटाइल एवं टूरिज्म सबुठु अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करबा बा सेही क्षेत्र रे अधिक निवेश आसीबो एवं नियुक्ति सुजोग सृष्टि होबा एभले एक संभावना रहिछि रिपोर्ट या कहूछि जे थाईलैंड 28 मिलियन जापान 26 मिलियन एवं इंडिया 9.3 मिलियन तेणु आमे केते तले केते पछरे अछंती एवं आज कहगला जे ओडिशा को एभली अनेक क्षेत्र अछि जोटी विकसित करा जिवो तेबे कौन स्पेसिफिक विकसित हम को एरिया को विकसित कर कौन आपन पाखे व्यवस्था अच्छी ये सब क्षेत्र क्लारिटी आवश्यकता अच्छी कि ना देखो समस्ते जानी जे एशिया महादेश सर्वबृहत लेक हूँ आमर निकट में अच्छी जो चिल्का मत लगुला जे चिल्कार डेभलपमेंट करवा बर्ड सेंचुरी करवा ताकू आहरी पर्यटन केमती पर्यटन क्षेत्र केमती विकास हम पर्यटक केमती आसबे तांकू आकृष्ट करने गोटे स्पेशल पैकेज रो व्यवस्था करते जेहेतु ओडिशा रु 20 जन सांसद जाइछन्ति निर्वाचित होइछन्ति तांका दलर मु आशा करूथिली जे अंतत पक्षे चिलिकार विकास हम एवं आउ अधिका पर्यटक आसबे ये हूँ गोटे कथा सबुठ बड़ कथा आम बेसी फोकस करूना जोटा गरीब मध्यवित्त श्रेणीर लोक